Hi guys. So today in our series of lectures on hepatobiliary system, we will discuss jaundice. This is very simple topic and this is one-time study topic. And you guys can develop few concepts which can help you remember this topic for a long period of time. Okay, so let's go. What is jaundice? Jaundice is increased level of bilirubin in blood. And these bilirubin particles might deposit in bulbar conjunctiva as well as in skin, resulting into yellowish discoloration of bulbar conjunctiva followed by skin. Okay, so the question arises why bulbar conjunctiva turns yellow before skin? Because bulbar conjunctiva has elastin fibers. And these elastin fibers have high affinity for bilirubin. Okay, so patient will come to you with chief complaint of yellowish discoloration of eyes followed by yellowish discoloration of skin. And if you examine this patient, you can demonstrate icterus, right, in natural light. So icterus will be present. Okay, so icterus is sign, whereas yellowish discoloration of eyes plus minus skin is the symptom. Too simple to understand. So bilirubin will get deposited in bulbar conjunctiva. B for bilirubin, B for bulbar conjunctiva, and icterus has to be seen over bulbar conjunctiva. Similarly, in anemic patients, you need to demonstrate pallor over palpebral conjunctiva. P for pallor, P for palpebral conjunctiva. Okay. So sometimes pallor and icterus can coexist, indicating towards a condition known as pre-hepatic jaundice or hepatocellular jaundice. तो ऐसा नहीं है कि अगर jaundice है तो जरूरी है liver involved हो. Okay, pre-hepatic jaundice हो सकता है, you call it hemolytic jaundice. Hepatocellular jaundice हो सकता है, जैसे hepatitis वगैरह में, that is the hepatic jaundice. And it can also be a case of post-hepatic jaundice, that is obstructive jaundice or surgical jaundice. डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. Let's discuss formation of bilirubin. So bilirubin is formed after old RBCs get destroyed in reticuloendothelial system. So lifespan of RBCs is 120 days. Old RBCs are taken up by reticuloendothelial cells and destroyed. So hemoglobin will be released. And globin from hemoglobin will be released into protein pool. And what about other thing? Heme will be released. And this heme will get converted into biliverdin. And then this biliverdin will ultimately get converted into bilirubin. Till now, there is no involvement of liver. Liver will uptake this bilirubin and convert it into conjugated bilirubin so that this can be excreted in urine. Okay? So bilirubin is waste product of breakdown of RBCs. Okay, so it has to be excreted. So liver will take up this unconjugated bilirubin and conjugate it and then excrete it in bile. Discuss करेंगे वो part में. हम लोग कह रहे हैं old RBCs are destroyed in reticuloendothelial cells, resulting into formation of unconjugated bilirubin. This unconjugated bilirubin is taken up by liver and conjugated and then excreted in bile. फिर से देखते हैं. RBCs get destroyed where? In reticuloendothelial system. Hemoglobin is released. Heme is released. From heme, ultimately, bilirubin will be produced. This will be unconjugated bilirubin. Okay? So, if in any case there is increased destruction of RBCs, okay, that is known as what? That is known as hemolysis, increased hemolysis. Okay, so in case of increased hemolysis due to increased RBC breakdown, there will be more formation of unconjugated bilirubin. लीवर की कैपेसिटी से ज़्यादा होगा इस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को अपटेक करके कॉन्जुगेट करके एक्सक्रीट करना. सो इवन इफ यू हैव फंक्शनल लिवर, इन केस ऑफ hemolytic jaundice, level of unconjugated bilirubin is going to increase. Okay. So in patient you can find pallor and icterus at the same time. And the bilirubin which will increase will be unconjugated. And if unconjugated bilirubin increases, this is case of indirect jaundice.
जब कॉन्जुगेटेड बढ़ेगा तो हम लोग कहेंगे डायरेक्ट जॉन्डिस है, जब अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा तो हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट जॉन्डिस. Because there is no involvement of liver, therefore SGPT and SGOT will be not. Very simple. तो hemolytic jaundice को आगे भी डिस्कस करेंगे. Here, old RBCs are getting destroyed in reticuloendothelial system, resulting into release of heme. Okay, then this heme is converted into biliverdin with the help of enzyme heme oxygenase. Biliverdin is further converted into bilirubin with the help of enzyme biliverdin reductase. यहाँ पे एक गैस देख पा रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस. ओके, दिस इज फॉर्म्ड ए बिलिरुबिन फॉर्मेशन. और किस स्टेप पे बन रहा है? जब हीमोग्लोबिन से हीम बना और हीम से बिलिवर्डिन बना. ओके, विद हेल्प ऑफ एंजाइम हीम ऑक्सीजनेज. सबसे इम्पॉर्टेंट इस लेक्चर में ये जानना है और हमेशा याद रखना है कि which form of bilirubin is water soluble and which form is fat soluble, that is lipid soluble. We have mnemonic for this. और दोनों में से एक भी mnemonic याद होगा. अगर ये याद हो जाए एक वाटर soluble है तो दूसरी वाली क्या होगी? फैट soluble या lipid soluble. So we have a mnemonic. Love you. Love you can be written like this also. Okay. L is for lipophilic. Okay. U stands for unconjugated bilirubin. So unconjugated bilirubin, being lipophilic, cannot be excreted in urine. Cannot be not excreted in urine. Okay? Even as level of unconjugated bilirubin increases in blood, right, it is not going to be excreted in urine. The reverse applies for conjugated bilirubin. We have one more mnemonic by the name of World Cup. Every country wants to win World Cup. World means water soluble and cup means conjugated bilirubin. So conjugated bilirubin is water soluble, right? It can be excreted in urine. But in normal situations, there is no conjugated bilirubin in blood. So in normal situations, there is no bilirubin in urine. Okay? Whereas in case of conjugated jaundice, that is direct hyperbilirubinemia, there is increased conjugated bilirubin in blood which is excreted in urine. So presence of bilirubin in urine indicates conjugated hyperbilirubinemia or direct jaundice. देखेंगे. Heme gets converted into biliverdin. Biliverdin gets converted into bilirubin and this is taken up by liver and conjugated. Conjugated bilirubin is excreted in bile and when this reaches second part of intestine, this is acted upon by intestinal bacteria. Again, intestinal bacteria unconjugates this bilirubin, resulting into formation of urobilinogen. And majority of urobilinogen is changed into stercobilinogen. And this stercobilinogen is released in stools. So stools are yellowish in color due to presence of stercobil. And a small amount of urobilinogen is again taken up by liver, that is approximately 20%, and this is enterohepatic circulation. A small amount of urobilinogen is taken up by liver to kidneys and excreted in urine. So in normal situations also, urine contains urobilinogen. Urobilinogen. And this urobilinogen imparts yellowish color to urine. So yellow color of stool is by stercobilinogen, whereas yellow color of urine is by urobilinogen in normal situations. Okay. Again, RBCs get destroyed and unconjugated bilirubin is getting formed. This unconjugated bilirubin is taken up by liver and conjugated. Conjugated bilirubin is excreted in bile and when this is acted upon by intestinal bacteria, it changes into urobilinogen. Urobilinogen has three fate. पहला क्या हो गया? Urobilinogen is released in urine and then 20% in enterohepatic circulation and large amount change into stercobilinogen and released in stools. Okay? Next, एक बार फिर से इसको डिटेल में देखते हैं. Okay? First of all, there will be destruction of RBCs, leading to formation of heme and ultimately formation of bilirubin.
bilirubin will be unconjugated, right? This unconjugated bilirubin is taken up by liver, okay, and conjugated. This is your liver. Conjugated bilirubin will be excreted in bile. और यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? There will be intestinal bacteria. Intestinal bacteria will again deconjugate it and make it urobilinogen. Majority of urobilinogen will get converted into stercobilinogen and released in stools, imparting stools normal yellowish color. Okay, some amount will be taken up by kidneys and released in urine. So urine is yellow due to urobilinogen, and 20% of this will be again taken up by liver, and this is the enterohepatic circulation. Okay, and this urobilinogen, which is taken up again by liver, will again be conjugated and excreted in bile. Very simple. अब देखते हैं कितने टाइप की जॉन्डिस हो सकती है. It can be prehepatic. We have already discussed, right, little bit of hemolytic jaundice, that is prehepatic jaundice. So if there is increased RBC destruction, it will lead to increased amount of unconjugated bilirubin. If unconjugated bilirubin increases, this is case of unconjugated hyperbilirubinemia or indirect jaundice. तो पहले केस में क्या होगा? It will be prehepatic. Unconjugated bilirubin is formed in such an amount that liver cannot take all the unconjugated bilirubin and excrete it after conjugating it. So in case of increased hemolysis, there will be increased unconjugated bilirubin, therefore known as hemolytic jaundice. Okay, liver enzymes will be normal because liver is not involved in this case. So SGPT and SGOT both will be normal. Okay, because liver is not involved in this case. SGOT, SGPT will be normal, right? What about second case? You have hepatic jaundice. In hepatic jaundice, the cause of jaundice is damage of liver, inflammation of liver. Okay, so in this case, both conjugated and unconjugated will increase, whilst unconjugated will not be fully taken up by liver, resulting into increased level of unconjugated bilirubin in blood. And whatever conjugated bilirubin is formed in liver is not getting excreted in bile. Rather, this is spilled in bloodstream, so even conjugated bilirubin will increase. So in case of hepatocellular jaundice, example case of hepatitis A, B, C, unconjugated bilirubin plus conjugated bilirubin will increase, plus because there is liver condition, therefore SGPT and SGOT both will increase. Okay, so marked elevation in liver enzymes along with increase in both conjugated and unconjugated is indicative of hepatocellular jaundice. Third is post-hepatic. Sometimes there can be stone in gallbladder, annular pancreas, so bile flow will be obstructed. Bile will not be able to reach second part of duodenum, resulting into spilling of conjugated bilirubin in blood. Okay, and along with increase in conjugated bilirubin, there will be few markers of bile canalicular inflammation, which are alkaline phosphatase, gamma glutamyl transpeptidase, and 5-nucleotidase. Okay, so here conjugated bilirubin is increased. You will label this case as direct jaundice, obstructive jaundice और सर्जिकल jaundice. तो बहुत ही इजी है, इसी को हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे. Here let's take case of hepatocellular jaundice और hepatic jaundice. हम लोगों ने क्या कहा? यहाँ पे डिसीज्ड लिवर होगा तो ना अपटेक कर पाएगा 100% अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का, ना 100% एक्सक्रीट कर पाएगा जो भी कॉन्जुगेट किया होगा. तो हम लोग कहेंगे ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विल इंक्रीज इन ब्लड. ओके, whatever liver has conjugated, right, this conjugated bilirubin will also not get excreted fully in bile. So this will again spill in blood. So conjugated bilirubin as well as unconjugated bilirubin both will increase in case of hepatocellular jaundice
along with raised level of SGOT, SGPT in particular, and sometimes even alkaline phosphatase can be increased. But main markers are SGOT and SGPT. Okay? Again, in case of hepatic jaundice, because uptake is decreased, so unconjugated bilirubin will stay in blood. Whatever conjugation is being done, this conjugated bilirubin is also not able to escape in bile juice. Okay, some amount will be released in bile juice. So this will again spill in blood. So in blood, conjugated bilirubin will increase, and because this is what? Hydrophilic, water soluble, World Cup, therefore it will be excreted in urine. So presence of bilirubin in urine indicates direct jaundice. Okay, क्योंकि केवल conjugated bilirubin being hydrophilic can be excreted in urine. Very simple. और क्योंकि hepatic jaundice है तो mainly SGPT and SGOT will increase. Too simple to understand. Now we are left with only post-hepatic jaundice. Post-hepatic jaundice में हम लोग कहेंगे this is obstructive jaundice और surgical jaundice. यहाँ पे liver ने already conjugate कर रखा है, but this conjugated bilirubin is not getting excreted, right? तो अगर ये bile में excrete नहीं हो रहा है, it can spill in blood, right? Resulting in increased amount of conjugated bilirubin. एंड यूरिन में भी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ पे लेवल बहुत ज़्यादा होगा. सो यूरिन कलर विल बी वेरी येलो. हम लोग कहते हैं हाई कलर्ड यूरिन अलॉन्ग विथ पेल स्टूल्स और क्ले कलर्ड स्टूल्स. क्यों क्ले हो गया? क्योंकि बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड फॉर्म नेवर अपीयर्ड इन इंटेस्टाइन, राइट? सो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया नेवर एक्टेड अपॉन दिस एंड देर इज नो stercobil or urobil. Okay, so urine might be very yellow due to presence of bilirubin, not due to presence of urobilinogen, and stool color will be pale or clay colored due to absence of stercobilirubin. So यहाँ पे history मिलता है हमें pale stools या clay colored stools along with what? High colored urine. High colored urine is not due to urobilinogen, due to conjugated bilirubin in urine. Very simple. आगे चलते हैं. तो हमारे पास प्री हिपैटिक है, हिपैटिक है, पोस्ट हिपैटिक है. हम लोगों ने समझ लिया है प्री हिपैटिक में क्या पैथोजेनेसिस है, हिपैटिक में क्या है और पोस्ट हिपैटिक में क्या है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हाट इज नॉर्मल लेवल ऑफ बिलिरुबिन? Normal level of bilirubin, normal level of creatinine is less than 1 milligram per deciliter, right? मान लेते हैं it is equal to 1 milligram per deciliter. So total serum bill is 1 milligram per deciliter at max. अब हमें कभी देखना ही नहीं है अनकॉन्जुगेटेड कितना है. Only have a look on conjugated bilirubin. Okay? तो conjugated bilirubin normal level is 0.1 to 0.3 milligram per deciliter. अगर यहाँ पे एवरेज लोगे it will come out to be 0.15. अगर परसेंटेज लोगे it will be 0.15% of total bilirubin. Rest will be unconjugated bilirubin. So normal situation में भी conjugated bilirubin is 15% by max, whereas unconjugated will be rest of the amount. ये तो क्लियर है, राइट? अब हम लोग बात करेंगे अगर किसी में जॉन्डिस है तो कितना प्रपोर्शन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का हो. तो हम लोग कहें कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट जॉन्डिस है. वैसे तो ऐसे होना चाहिए 50% से ज़्यादा अगर कॉन्जुगेटेड है तो कॉन्जुगेटेड बोलना चाहिए. 50% से ज़्यादा अगर अनकॉन्जुगेटेड है देन यू शुड लेबल इट एज अनकॉन्जुगेटेड और इनडायरेक्ट जॉन्डिस. लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि जो नेचुरल रेशियो है वो क्या है? कॉन्जुगेटेड इज ओनली मैक्सिमम ऑफ 15% ऑन एन एवरेज. ओके, तो अगर मान लो किसी को जॉन्डिस होता है तो 15% से कम कॉन्जुगेटेड होगा, तभी आप कहोगे इसको इनडायरेक्ट जॉन्डिस. अगर कॉन्जुगेटेड मोर देन 15% है, इसका मतलब रेशियो में कौन इंक्रीज हुआ है? कॉन्जुगेटेड. ओके, दो देयर विल बी रेस्ट ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, बट यू विल लेबल इट एज डायरेक्ट जॉन्डिस और कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया. लेकिन यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में है, तो हम लोग क्या कह देते हैं? दिस इज प्रीडोमिनेंटली डायरेक्ट जॉन्डिस और यू कैन ऑल्सो लेबल इट एज मिक्स्ड फॉर्म ऑफ जॉन्डिस. ओके,
अगर डायरेक्ट जॉन्डिस 50% से ज़्यादा हो जाए, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस में इनडायरेक्ट नहीं बढ़ रहा है, देयर इज ओनली इंक्रीमेंट ऑफ डायरेक्ट जॉन्डिस या डायरेक्ट बिलिरुबिन, तो हम लोग कहेंगे दिस इज more than 50%, and if conjugated bilirubin is more than 50%, you can label it as direct jaundice. तो 50-50 का रेशियो नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे अगर conjugated bilirubin is greater than 15%, you can label it as direct jaundice. ओके और यहाँ पे कुछ क्या है हमारे पास, अनकॉन्जुगेटेड भी है, कुछ नहीं काफ़ी अनकॉन्जुगेटेड भी है, हम लोग इसको बोल देते हैं मिक्स्ड पैटर्न, or you can also say it as predominantly direct. कब मिलना चाहिए, हम लोगों ने कहा था हिपैटोसेलुलर कंडीशंस में, जब अपटेक भी कम है रिलीज भी कम है, अपटेक कम है तो अनकॉन्जुगेटेड ज़्यादा, रिलीज कम है तो कॉन्जुगेटेड ज़्यादा, राइट. टिपिकल केस इन हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस और हिपैटिक जॉन्डिस. ऑब्स्ट्रक्टिव होगा, एवरीथिंग हैज़ बीन डन, कॉन्जुगेशन हो चुका है, केवल रिलीज नहीं हो रहा है. ओके हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विल बी क्वाइट हाई, और ये देखा गया इट इज़ मोर देन 50%, सो दिस इज प्योरली ऑब्स्ट्रक्टिव, देर इज नो इंक्रीमेंट इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एज सच. इन प्री हिपैटिक वी हैव ऑलरेडी सीन देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिवर, only there is increased RBC destruction leading to increased unconjugated bilirubin. So this is case of indirect jaundice. यहाँ पे 85% से ज़्यादा unconjugated होगा, मतलब 15% से कम conjugated होगा, हम लोग कह देंगे this is indirect jaundice और pre-hepatic jaundice. I think you guys got my point. अब हम लोग bilirubin को और liver enzymes को hand in hand लेके चलेंगे. What are the liver enzymes? Right? हमारे पास ALT और AST है. Okay? AST also known as SCOT. ALT also known as SCPT. Very simple. Then you have alkaline phosphatase, gamma glutamyl transpeptidase and 5' nucleotidase. ध्यान से देखो, सबसे छोटा कौन सा है, 5' nucleotidase, इसका लेवल सबसे कम होगा. ओके तो अगर हम लोगों को याद करना हो नॉर्मल लेवल ऑफ लिवर एंजाइम्स, उसको भी हम लोग निमोनिक से याद कर सकते हैं. सबसे कम क्या होगा, 5' न्यूक्लियोटाइडेज. ओके फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज, दैट इज ALT, AST एंड GGT विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर. एल्कलाइन फॉस्फेटेज उससे ज़्यादा होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो कि नॉन स्पेसिफिक लिवर एंजाइम है उससे भी ज़्यादा होगा. ओके तो ये तो 5 लिवर एंजाइम्स को याद करना है. आगे चल के ये देखना है इनका अमाउंट कितना है, आगे चल के ये देखना है किन हिपैटिक कंडीशंस में ये इंक्रीज होंगी. राइट लेट्स सी. तो पहले एक निमोनिक, हम लोगों ने क्या देखा था, 5' न्यूक्लियोटाइडेज स्मॉलेस्ट लेटर, ये सबसे कम होगा. जिसके लास्ट में T होगा सब इक्वल होंगे, बीट GGT, बीट ALT, बीट AST, सब कितने होंगे 15 to 50. ALP 50 to 150, जहाँ पे T वाले ख़त्म होंगे वहाँ से ALP स्टार्ट होगा. देन यू हैव LDH, जहाँ पे ALP ख़त्म होगा वहाँ से LDH स्टार्ट होगा. तो सारे लिवर एंजाइम्स के नॉर्मल लेवल को हम लोग देख लेते हैं. ओके हम लोग कहेंगे 5' न्यूक्लियोटाइडेज 0 to 15 यूनिट पर लीटर. देन यू हैव T ग्रुप, ALT, AST, GGT, सबका लेवल इक्वल होगा और सब कहाँ से स्टार्ट होंगी, जहाँ पे 5' न्यूक्लियोटाइडेज ख़त्म हुआ है, 15 to 50 यूनिट पर लीटर. नाउ यू आर लेफ्ट विद एल्कलाइन फॉस्फेटेज, तो जहाँ पे ये ख़त्म होगा वहीं से एल्कलाइन फॉस्फेटेज स्टार्ट होगा, दिस विल बी 50 to 150. जहाँ पे ये फिनिश होगा वहीं पे LDH स्टार्ट होगा एंड दिस विल बी 150 to 250 यूनिट पर लीटर. सो वी हैव सिंप्लीफाइड इट. ओके बहुत ही इजी हो गया है. कभी भी अगर लिवर एंजाइम्स के लेवल को पूछा जाए, दिस निमोनिक विल बी एवर ग्रीन, एवर हेल्पफुल. ओके हम लोगों ने क्या कहा है, 5' न्यूक्लियोटाइडेज सबसे छोटा है, राइट सबसे कम लेटर्स हैं 0 to 15, सबसे कम अमाउंट है. जहाँ पे ये ख़त्म होगा वहीं पे ALT, AST और GGT, जहाँ पे T आ रहा है सबको एक साथ क्लब कर दिया, 15 to 50. देन जहाँ पे ये एंजाइम्स ख़त्म हो रहे हैं वहीं से एल्कलाइन फॉस्फेटेज स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ पे एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ख़त्म हो रहा है वहीं से LDH का लेवल स्टार्ट हो रहा है.
I think this mnemonic will help you remember all the liver enzymes for long period of time. फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, राइट? हम लोग कह रहे हैं यू हैव 5 लिवर एंजाइम्स, 1 2 3 4 5, LDH को छोड़ दो, ओके? यू हैव alanine transaminase, that is also known as SGPT. You have AST aspartate transaminase, also known as SGOT. Okay? You have alkaline phosphatase. You have gamma glutamate transpeptidase. You have 5-nucleotidase. Okay? काफ़ी सिंपल होने वाला है. ये दोनों ज़्यादातर लिवर सेल्स में होंगे. So these will be released in hepatocellular damage. Hepatocellular damage. तो जब भी हिपैटिक जॉन्डिस होगा, पर्टिकुलरली SCPT और SCOT इंक्रीज होंगे. हम लोग कह रहे हैं ये किस में है? लिवर सेल्स में है. तो जब भी लिवर सेल्स डैमेज होंगे, ALT और AST यहाँ से लीक होंगे, तो सीरम में इनका लेवल इंक्रीज होगा. सो दीज आर मार्कर्स ऑफ हिपैटोसेलुलर डैमेज. जबकि ALP, गामा ग्लूटामेट ट्रांसपेप्टाइडेज और 5-nucleotidase आर मेजरली प्रेजेंट इन बाइल कैनालिकुलर सेल्स. ओके? अगर मान लो कभी कॉलेस्टेसिस होगा, बाइल डक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तब इनका लेवल इंक्रीज होगा. तो हम लोग कहेंगे मेनली इंक्रीज इन कॉलेस्टैटिक जॉन्डिस. ओके? कॉलेस्टैटिक जॉन्डिस, दैट इज पोस्ट हिपैटिक या सर्जिकल या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. वेरी वेरी सिंपल. ओके? अब हम लोग बिलिरुबिन के लेवल से, टाइप ऑफ बिलिरुबिन से एंड लिवर एंजाइम्स को क्लब करके कंक्लूड कर सकते हैं किसी में किस टाइप का हेपेटाइटिस है, और ये देखेंगे उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. ओके? लेट्स सी. हम लोगों ने कहा है प्री हिपैटिक में क्या है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज इंक्रीजिंग, बट liver enzymes SCPT and SCOT will be normal. Okay? So this is case of indirect jaundice. Okay? Very simple example जैसे beta thalassemia, malaria, etc. Second case is of what? Hepatic or hepatocellular jaundice. Hepatic jaundice. हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? यहाँ पे अपटेक भी कम होगा, रिलीज भी कम होगा. सो देयर विल बी इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एज वेल एज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. बट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस दिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विल बी मोर देन 15%. तो हम लोग इसको क्या कह देंगे? देयर विल बी मिक्स्ड पैटर्न और प्रीडोमिनेंटली conjugated jaundice. Very very simple. Plus there will be increased level of SGPT and SGOT in particular. So liver enzymes will be raised. So there will be mixed pattern. What about third case? You have post-hepatic. That is obstructive. In post-hepatic, only conjugated bilirubin will increase. This is the case of direct jaundice. Right? And here liver enzymes which will be increased will be alkaline phosphatase, 5-nucleotidase and gamma glutamate transpeptidase, क्योंकि ये बाइल कैनालिकुलर सेल से रिलीज होते हैं, राइट? और ये आपके स्ट्रिक्टली लिवर सेल हिपैटोसाइट से रिलीज होते हैं. अब मेरे ख्याल से ये बिल्कुल क्लियर है हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्री हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक. ओके? अब कॉजेज देख लेते हैं. प्री हिपैटिक में हम लोग क्या कहेंगे? हिमोलिटिक कॉजेज और कुछ कंजेनाइटल कॉजेज, जहाँ पे लिवर अपटेक ही नहीं कर पा रहा है किसका? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का. तो वी हैव 2 syndromes, गिलबर्ट एंड क्रिगलर-नजर. Any hemolytic cause can produce prehepatic or hemolytic jaundice. This is too simple to remember. What about hepatocellular? Any liver disease, be it alcoholic liver disease, Wilson's disease, hemochromatosis, hepatitis, anything can cause hepatocellular, जहाँ पे SGOT, SGPT इंक्रीज होंगे, अनकॉन्जुगेटेड भी इंक्रीज होगा, कॉन्जुगेटेड भी इंक्रीज होगा, बट यू विल से इट एज प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया. In post-hepatic, there can be obstruction to biliary duct.
It can be due to cholangiocarcinoma, bile duct stone, pancreatic stones, annular pancreas, anything. So this is surgical jaundice. यहाँ पे conjugated bilirubin increase होगा plus ALP, AS and GGT and 5' nucleotides will get raised. अब क्रिस्टल क्लियर होगा किस टाइप की हेपेटाइटिस में, किस टाइप की जॉन्डिस में इनफैक्ट कौन सा टाइप का बिलिरुबिन इंक्रीज होगा, वेदर इट विल बी डायरेक्ट जॉन्डिस, इनडायरेक्ट जॉन्डिस और मिक्स पैटर्न, एंड व्हाट विल बी द लेवल ऑफ एंजाइम्स एंड विच एंजाइम्स विल इंक्रीज इन विच टाइप ऑफ जॉन्डिस. Okay, so if conjugated is less than 15%, only then you will call it as indirect jaundice. This is prehepatic, mainly you have hemolytic, right? Or Kriegler-Nasser or Gilbert syndrome, okay? Congenital causes. You have predominantly direct और mixed pattern, क्योंकि यहाँ पे direct कितने से ज़्यादा हो गया, 15 से ज़्यादा हो गया, okay? तो हम लोग कहेंगे this is hepatic. यहाँ पे SCOT भी इंक्रीज होगा, SCPT भी इंक्रीज होगा, ओके. देन यू हैव कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मोर देन 50%, राइट? दिस इज डायरेक्ट जॉन्डिस, दिस इज ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न, सर्जिकल जॉन्डिस, ओके. हम लोग कहेंगे यहाँ पे ALP, GGT, ओके, एंड 5' न्यूक्लियोटाइडेज विल इंक्रीज. सबके लेवल को भी हम लोगों ने देख लिया है, राइट? किस लेवल एंजाइम का क्या नॉर्मल लेवल होता है इंक्लूडिंग LDH. आई होप यू गाइस विल रिमेंबर दिस. फाइनल टच में हम लोग क्या करेंगे? प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड देन पोस्ट हिपैटिक. वेरी वेरी सिंपल. यहाँ पे ओनली अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विल इंक्रीज. हम लोग कहेंगे SGOT, SGPT विल बी नॉर्मल, ओके. यहाँ पे बोथ अनकॉन्जुगेटेड and conjugated bilirubin will increase. You will call it as predominantly conjugated or mixed pattern, and here SCPT and SCOT will increase more than 3 times. Post hepatic में हम लोग कहेंगे only conjugated bilirubin will increase, plus ज़्यादातर increase होगा ALP में, gamma glutamyl transpeptidase भी, and 5' nucleotidase. So indirect, mixed pattern and direct jaundice, okay. एक बार फिर से रिकैप करते हैं. प्री हिपैटिक, राइट, दीज आर द कॉजेस, जैसे मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया. यू हैव हिपैटिक, एनी हिपैटिक कॉज लाइक एल्कोहलिक लिवर डिसीज, हेपेटाइटिस, दैट इज वायरल हेपेटाइटिस, विल्सन्स डिसीज, एनीथिंग, इस्कीमिक हेपेटाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, ओके. कॉजेज याद करना बहुत ही ईजी है. पोस्ट हिपैटिक मीन्स यू नीड टू रूल आउट द ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज, पर्टिकुलरली कोलेलिथियासिस, ओके. तो हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है, ओके. एक बार अगर लिवर एंजाइम्स के लेवल को भी रिवाइज कर लिया जाए, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. लेट्स स्टार्ट विथ 5' न्यूक्लियोटाइडेज 0 to 15, ओके. देन यू हैव एल्कलाइन फॉस्फेटेज 15 to एल्कलाइन फॉस्फेटेज, दिस विल बी ELP. एलेनिन ट्रांसएमाइनेज, इसका कितना लेवल होगा? यू हैव 15 to 50. AST अगेन 15 to 50. GGT 15 to 60. अब हम लोग एल्कलाइन फॉस्फेटेज पे आएंगे 50 to 150, एंड फाइनली यू हैव LDH 150 to 250. We are done with jaundice, almost done. Now it is very important to talk about few congenital form of hyperbilirubinemia. कभी कभी डायरेक्ट जॉन्डिस होगा कंजेनाइटल में, कभी कभी इनडायरेक्ट जॉन्डिस होगा. वेरी सिंपल. डायरेक्ट जॉन्डिस के कॉजेज हैं ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड रोटर सिंड्रोम. इनडायरेक्ट के कॉजेज हैं क्रीगलर नजर और गिलबर्ट, अभी हम लोगों ने देखा, राइट. तो अगर मान लो मैंने कह दिया डायरेक्ट में यू हैव रोटर सिंड्रोम एंड ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, इनडायरेक्ट में यू हैव क्रीगलर नजर सिंड्रोम एंड गिलबर्ट सिंड्रोम, ओके. एक याद कर लेते हैं कोई. डायरेक्ट को कैसे याद करोगी? डायरेक्ट को हम लोग देखते हैं फार्माकोलॉजी में, there is dose response curve, okay. dose response curve, you study this thing in pharmacology. तो डायरेक्ट के जो कॉजेज होंगे वो डोज रेस्पॉन्स कर्व, ओके. कर्व का मतलब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, डोज का मतलब ड्यूबिन जॉनसन, आर का मतलब रोटर. तो वो निमोनिक बेस्ट होते हैं जिसमें क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होता है, ओके.
So these are the causes of congenital hyperbilirubinemia, मतलब हम लोग hereditary causes of jaundice को देख रहे हैं. यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी, only bilirubin levels will be increased, liver enzymes will stay normal, और ज़्यादातर कंडीशन क्या होंगी, एसिम्प्टोमेटिक होंगी. ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है, देयर इज डिफेक्टिव एक्सक्रीशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इनटू बाइल कैनालिकुलाई. तो अगर एक्सक्रीट नहीं होगा तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होगा, राइट. दिस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एसोसिएटेड प्रोटीन, दैट इज MRP2. और अगर यहाँ पे बायोप्सी करोगे यू कैन फाइंड ब्लैक लीवर. ओके, ब्लैक लीवर, very very important. So Dubin-Johnson syndrome and Rotor syndrome can lead to conjugated bilirubinemia. Okay, हम लोग कहेंगे drug response curve, Dubin-Johnson, Rotor, and curve means conjugated hyperbilirubinemia. Okay, so you have congenital in form of direct and in form of indirect jaundice. Okay, here you have Dubin-Johnson syndrome and Rotor syndrome. Remember by drug dose response curve, DRC. बच गए आपके indirect Gilbert syndrome, Crigler-Najjar syndrome. And majority of these conditions are inherited by autosomal recessive pattern. अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है, काफ़ी सारे निमोनिक्स के हम लोगों ने हेल्प दिए हैं. लेट्स टेक अ क्वेश्चन. पेशेंट प्रेजेंट्स विद एलिवेटेड बिलिरुबिन लेवल्स. Urine bilirubin is absent. Urobilinogen is absent and bilirubin is present. Urobilinogen नहीं, इसका मतलब conjugated bilirubin never reached in intestine. Intestinal bacteria never acted upon what? Conjugated bilirubin. So this indicates what? Obstruction. And when there will be obstruction, there will be increased level of conjugated bilirubin. And you guys know, World Cup, water soluble conjugated bilirubin. This bilirubin can be excreted in what? Urine. Okay, हम लोग कहेंगे यहाँ पे हेपेटाइटिस, हम लोग कहेंगे यहाँ पे हेमोलिटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, गिलबर्ट सिंड्रोम. क्या कॉज हो सकता है यहाँ पे? ओके, सो मेनली दिस विल बी सीन इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. एंड क्लासिकल केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हम लोगों ने डिस्कस किया है. क्या हो सकते हैं? गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं, एन्युलर पैनक्रियाज हो सकता है, कोलेंजियोकार्सिनोमा हो सकता है. सो हियर बेस्ट आंसर इफ यू कैन चूज इज ऑब्स्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ जॉन्डिस. हैड दिस बीन केस ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस में अनकॉन्जुगेटेड भी इंक्रीज होगा, कॉन्जुगेटेड भी इंक्रीज होगा. हेपेटाइटिस में कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विल रीच सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूodenum एंड सम अमाउंट ऑफ व्हाट? यूरोबिलिनोजन विल गेट फॉर्म्ड. Only in case of obstructive jaundice, there will be no formation of urobilinogen, right? तो हम लोग कहेंगे urobilinogen will be missing only in case of obstructive jaundice. Very very simple. एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन लेते हैं. 56-year-old man presents to internist with jaundice. The patient is receiving no medication and only symptoms are mild fatigue over past 2 months. Okay, intern ने देखना है इस पेशेंट को. Physical examination is remarkable only for the presence of scleral icterus, so icterus is present. On evaluation, you found that SGPT and SGOT normal. दोनों का लेवल हम लोगों ने देखा है, निमोनिक से हम लोगों ने देखा है 15 to 50 will be normal. Okay, what about bilirubin? Total serum bilirubin is 7 एंड डायरेक्ट इज 5. तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना है? कॉन्जुगेटेड यहाँ पे 5 है. सो दिस इज ग्रेटर देन 50%. सो यू कैन लेबल दिस केसेस ऑफ डायरेक्ट जॉन्डिस. ओके, और डायरेक्ट जॉन्डिस में यू हैव सीन दैट दिस इज केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. तो यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है. तो जब भी डायरेक्ट जॉन्डिस होगा हम लोग कहेंगे सर्जिकल जॉन्डिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है. ऑब्स्ट्रक्शन होगा, गॉल ब्लैडर स्टोन होगा, एन्युलर पैनक्रियाज होगा, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन विल बी अल्ट्रासाउंड. ओके, अल्ट्रासाउंड में ये देखना होगा वेदर देयर विल बी बिलियरी डक्ट डायलिटेशन और नॉट, वेदर देयर इज डायलिटेशन ऑफ इंट्राहिपैटिक बिलियरी डक्ट और एक्स्ट्राहिपैटिक बिलियरी डक्ट्स, राइट. Depending on these conditions, you can further plan for ERCP, MRCP and liver biopsy. But in case of what?
ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, योर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन शुड बी अल्ट्रासाउंड। कॉमन सेंस से भी सोचो, मान लो किसी में कॉन्जुगेटिव जॉन्डिस है, पहले गॉल ब्लैडर स्टोन्स या कोई एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन रूल आउट कराना चाहोगी, राइट? सो यू हैव टू गो फॉर अल्ट्रासाउंड। I hope this was a lengthy lecture but very productive. See you in next lecture. Bye bye. Take care.